Okay, we will start today. Now, so today's topic is the value of time, right? So we'll have a very quick four slide here, and then we'll go to the quiz, which is more interesting part, right? So, as we all know, that time is the most valuable asset. There is no disagreement in that. Whatever happens, whatever we do in our life, is all because we have this blessing of time. If we run out of time for any activity, no matter how capable we are, no matter how many things we have, we can't do it, right? So most of the time, we don't value time because time is available to everyone. So if something is available by default and we don't feel in any situation the lack of time, so we tend to be lazy and we do tend to just time pass and then we don't give much consideration. So this is something which we should care for. There is one very important surah which is called Surah Asr, where Allah subhanahu wa ta'ala explains the value of time by taking an oath of time, right? So Allah Ta'ala in Surah Asr says, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. By default or by design, or like if we don't do anything, we are in loss. Everyone is in loss, except for few qualities. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, those who believe, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, did good deed, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, they stand on truth, वतवासो बिस्सब्र, और जिन्होंने सब्र के बारे में कहा, और those who practice patience, right? So this is what we should be mindful of. So that is the point which is mentioned in the second bullet point, that we are in loss unless we live with awareness, truth and purpose, right? We should pause and reflect that where is our time going. In our last discussion, we touched this topic, that we should make a habit of reflecting on our day, that what we did for today, what new things we learned, and if possible make a notebook or diary to note down all the good bad happened for the day. In the diary we should not be complaining, we should be writing the good stuff which we did, like our accomplishments, and things which are which we see as a challenge, which we should be improving going forward. With this, there is an emphasis on the purpose of education in Islamic value system which we have. What we see education as a three-tier process. Like on the very first level, the purpose of education is to make yourself useful. You should have some skills, some survival qualities, so that you can live in this world. So that is one level of education. Second is that we should have some consciousness to Allah subhanahu wa ta'ala. The second layer of education is to do ibadah with all ikhlas. So this is this is where we need education as well. Then the third layer of education, or the most pinnacle of education, is that you develop yourself in a way that you bring impact to the society, and you carry responsibilities for the people around you. So education is not only degrees and certificates. You should have some qualities which make you establish. You are not financially dependent on someone. You earn your own money, you pay your own taxes, and basically live on your own terms. And then you should not forget why you are here. You should have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala, and then you should be strong enough to bring an impact to your family, your community, and to the world. Education should be looked as a means of transformation. It's not like
just accumulation of some knowledge or accumulation of some degrees. You should view education as a transformative power which transforms you, and every day should bring something good in you. That's the ongoing purpose of education. We should avoid intellectual blindness. What is intellectual blindness? Intellectual blindness is taking everything on face value, and we starting to believe that okay, if someone is saying something of higher authority, it must be true. We should always question whatever information comes to us, whether in our deen or in our dunya. The Muslim mindset is that we do not blindly accept or we do not blindly reject. We make ourselves on a skeptic position. We verify and then we accept, or we verify and then we reject. Right? We should build our own thinking with Quran, Sunnah, reflection, and critical thinking, as we discussed last time as well. And we should not outsource our thinking process. Whatever we do, it's our own responsibility to think and act. So don't let other things for you. You should be having your own thinking mind. Last thing in this discussion today, that if you are busy, this do not mean that you are productive. So if you are very busy whole day, it's quite possible that you are not productive the whole day. So you being busy is not equal to being productive. So being productive means how much you are gaining in terms of knowledge, or how much you are changing yourself, right? We should avoid distractions like scrolling, excess entertainment. We should put a hard timeline for all those things. We should balance enjoyment, but we should stay focused on our purpose. So this is what is the topic for today. I hope you guys like it. Now we will quickly go to the quiz section and we'll discuss things as it comes in the quiz. So let me start sharing. 1 minute. Host. Start. Let me know if it is visible, and just join using this pin. Sehan, Sana, Adiba, Isa, Mayam, Fahad. Okay, good. Now we will start. Good. This is pretty straightforward, no discussion needed here. Next question. Good. If we waste time, we are in loss.
We only win when we get something useful from the time, right? If we don't get anything useful, it's a wastage of time, and that's also mentioned in Quran, that Allah subhanahu wa ta'ala says that wala salinal insan al fi khusr. By the passage of time, humanity is in loss unless, and then there are certain qualities we should be mindful of. Next. Yep, Quran and reflection. See, the book which we have, Quran, is the book which is given by Allah subhanahu wa ta'ala. So the wisdom which is presented to us from Quran is the ultimate source of truth, is the ultimate source of power. So we should always have Quran as a center point for our all academic learning, and we should reflect, of course, on whatever we do. Yes, Khilafa means leading with responsibility. It's not like leading with arrogance or leading with power. So we should have responsibility, and then we should lead ourselves, our family, everything with responsibility. Okay. So hidden power structure. So Jeffrey Epstein case today, if you see in news, you'll see that all the intellectuals and the so-called people who were like the torchbearers of freedom, democracy, feminism, atheism, they are all complicit in very dirty cases, right? So this exposes the hidden power structure. So there is always a hidden power structure behind the democratic system which we see in the world, and Jeffrey Epstein case actually exposed those power. So that's the right answer. Go to the next one. Yep, entertainment should be balanced. If it is not balanced, then I think everything should be balanced, right? The whole purpose of our existence is to maintain the balance, and things which actually attracts us most, there we should be more mindful of exercising the balancing act. Yep. So the purpose should guide decision. If we lack purpose, then we will never be able to have good decision in our life. We should always have a purpose, and the purpose should have one or many objectives. We should have a vision of our life, and then those all vision and our purpose should drive our small decisions in the life. Real education क्या है? What is real education? Real education is actually transformation. It's not your homework, marks or test. I will just pause for 1 minute. I think Minhaj has joined. So Minhaj, can you see the screen? आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है?
ओके, अभी आप कंटिन्यू करें। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो रिस्पॉन्ड करें, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं। we'll continue with the quiz and then we'll talk in the end. Okay, let's go to the next question. What does Surah Al-Asr emphasize? राइट, वेरी इजी। सूरह अल असर में जो है अल्लाह सुब्हान ताला ने टाइम के बारे में जो है टाइम को एज अ ओथ लेके बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है ना। तो यहाँ पे टाइम ही आएगा। राइट, स्टूडेंट शुड कंपेयर विथ, हमको हमेशा अपने आप से ही या अपने गोल से कंपेयर करना चाहिए। वी शुड नॉट कंपेयर विथ आवर फ्रेंड्स, वी शुड नॉट कंपेयर विथ एनी वन एल्स लाइक सेलिब्रिटीज़ और पेरेंट्स। फ्रेंड से हम कंपेयर कर सकते हैं अगर उनके अंदर कोई अच्छी आदत है, तो हमें हमारे अंदर ये इंटेंशन होना चाहिए और हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम उस अच्छी आदत को डेवलप करने की कोशिश करें। लेकिन किसी की अच्छी आदत से अगर आप जेलस फील कर रहे हैं, आपके दिल में जो है नफ़रत आ रही है, तो फिर वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। सो वी शुड ऑलवेज कंपेयर विथ आवर ओन गोल्स एंड टेक वॉट एवर गुड इज इन द अदर पीपल, राइट। राइट, हमारा दीन जो है हमें बैलेंस थिंकिंग की दावत देता है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, डबल पॉइंट। बिजी होने का मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्टिव हैं, है ना। कभी कभी हम बिजी होते हैं बहुत, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा होता है, कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं होता है। तो बिजी हम ख़राब काम में भी हो सकते हैं, हम मूवी देखने में बिजी हैं या ऐसे ही सोशल मीडिया में बिजी हैं। तो बिजी का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा नॉट नेसेसरली प्रोडक्टिव, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है। कई बार हमसे कोई सवाल आता है कि भाई क्या कर रहे हैं आप, अच्छा कहीं चलना है या कुछ काम है, तो आप कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बिज़ी हूँ, है ना। तो हमें ये हमेशा देखना चाहिए कि हम किस चीज़ में बिज़ी हैं, है ना। राइट, टाइम को यूज़ करने का जो की मैसेज है, व्हाट इज़ द की मैसेज फॉर यूजिंग टाइम इज़ दैट वी शुड थिंक डीपली एंड यूज़ टाइम वाइजली, है ना। अगर हम अक्लमंदी के साथ वक्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वक्त हमारा इस्तेमाल कर लेगा और हम साइडलाइन हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, इबादत का जो मकसद है वो अल्लाह सुब्हान ताला से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। राइट, एजुकेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो इमारा है। इमारा का मतलब ये होता है कि अपने आप को इतना कैपेबल बना लेना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, है ना। मतलब कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, हम हमारे अंदर इतनी एजुकेशन हो कि हमारी कहीं नौकरी लग जाए, हम पैसे कमाने वाले हो जाएं, अपना ख्याल रखने वाले हो जाएं, और ये जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। वो इमारा है। इबादत का क्या मतलब है
कि जैसे जैसे हम एजुकेटेड हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनियादार ही हो गए, हम अल्लाह सुब्हान ताला को भूल गए। तो सेकंड स्टेज क्या है कि जैसे जैसे आप एजुकेटेड हो रहे हैं वैसे वैसे आपकी जो नज़दीकी है अल्लाह सुब्हान ताला से और अपने दीन से वो बढ़नी चाहिए, वो सेकंड स्टेज है इबादत। थर्ड स्टेज खिलाफा क्या है? खिलाफा का मतलब ये है कि आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप लीड करें अपने अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को, और जब वक्त आगे आए तो आप जो है खिलाफत के लिए भी तैयार हो, है ना, उतनी स्ट्रॉन्ग आपके अंदर क्वालिटीज़ आए, तो वो स्टेज खिलाफा की है ना। लीडिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड खिलाफा। राइट, इमारा का जो फोकस है वो सर्वाइवल स्किल है, मतलब आपके अंदर इतनी काबिलियत हो जाए कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, दैट इज़ इमारा। और स्पिरिचुअलिटी जो है, जो तीन लोगों ने सही जिसको कहा है, वो है सेकेंड स्टेज। इबादत का जो है वो आपका फोकस है कि जब आप इबादत करें तो आपके अंदर जो है रूहानियत हो, तसव्वुफ हो, उसके अंदर आप जो है आपके अंदर इंट्रोस्पेक्शन हो, मुहासबा करने की ताकत हो आपके अंदर, वो इबादत है ना। तो इसका सही आंसर है सर्वाइवल स्किल। हम्म आपका फ्यूचर कौन डिसाइड करता है? ऐसे तो हम लोग का ये ईमान है कि जो भी चीज़ होती है वो अल्लाह के हुक्म से होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसी निज़ाम के अंदर जो है अमल भी डाला है, मतलब हमें जब तक हम अमल नहीं करेंगे तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो अमल का दारोमदार जो है हमारी नीयत पे है, जैसे नीयत होगी वैसा हमारा अमल होगा। लेकिन इसको जो डे टू डे हम जब इसको कोई काम करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारी हैबिट का होता है। अगर हमने अपनी हैबिट को चेंज नहीं किया तो हम हमेशा जो है स्ट्रगल करते रहेंगे रिजल्ट के लिए। ये हम लोगों ने जो पहला क्विज़ किया था एटॉमिक हैबिट्स, उसके अंदर हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी, राइट। सो हैबिट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक इफ़ वी डेवलप गुड हैबिट्स, the success will always come to you. Success will be attracted to you. So habit is like a magnet. Now if we have bad habits, then no matter what we do, we will always struggle to get success. Why is time important? टाइम important क्यों है? टाइम important इसलिए कि ये बहुत जल्दी से पास हो जाता है, यही एक सही ऑप्शन यहाँ पे है। ये एक्सपेंसिव वॉचेस की वजह से नहीं है, या टाइम कैन बी रिपीटेड, टाइम को रिपीट नहीं किया जा सकता। जो वक्त चला गया वो चला गया, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। टाइम कैन नेवर बी रिपीटेड। टाइम जो है, जैसे हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो इस तरह से हम टाइम को पैदा भी नहीं कर सकते और टाइम को हम रिसाइकिल भी नहीं कर सकते। सो वट एवर टाइम वी हैव, वी शुड बी थैंकफुल ऑफ दैट टाइम, है ना। ओके, राइट, इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस इज इग्नोरिंग ट्रूथ, राइट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस के। इंशाल्लाह हम लोग मतलब अगर हम ये क्विज़ करते रहे, हम इन टॉपिक्स के ऊपर और स्पेसिफिक क्विज़ बनाएंगे। इग्नोरिंग ट्रूथ का मतलब एक ये भी है कि जब हम ये कहते हैं कि वी आर लॉजिकल, वी आर रेशनल, और जब हम लॉजिकल और रेशनल पॉइंट्स देते हैं तो हम सिर्फ अपने बिलीफ की बुनियाद पे उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सच का जो इनकार है वो इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस कहलाता है। और सच का इनकार जो है, इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसके बाद उसमें उन्होंने बताया कि सच का इनकार जो है वो किब्र कहलाता है, घमंड, है ना, तकब्बुर जिसको कहते हैं।
तो इससे हमें बचना चाहिए बहुत ही। दीन के अंदर जो है अगर हम तकब्बुर करते हैं तो कहा गया है कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत की खुशबू तक इसको नहीं मिलेगी। और दुनिया में ये मसला होता है कि अगर आप तकब्बुर है, आपके अंदर प्राइड है, एरोगेंस है, तो आपको नॉलेज जो है हासिल नहीं होती, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपका दिल तकब्बुर से खाली है, यू हैव योर हार्ट इज़ डिवाइड ऑफ एनी काइंड ऑफ प्राइड, then you will attract knowledge. Okay, so this is the last question now. Right. Before accepting any idea, we should understand it deeply. Understand deeply का मतलब क्या है? Understand deeply का मतलब ये है कि कोई भी आइडिया जब हमारे पास आता है, उस आइडिया के पीछे उसका एक प्राइमरी सोर्स होता है, तो हमें उस प्राइमरी सोर्स तक पहुंचने की ज़रूरत है ना। कोई अगर इंसान कहता है कि इस्लाम में या दीन में ये चीज़ है, तो आपको ये पता करना होगा कि उसके पीछे दलील क्या है, उसका सोर्स क्या है। सिर्फ इस बात पे नहीं कि कोई कुछ कह रहा है तो आप उसको मान लेंगे। दुनियावी इल्म के अंदर क्या करना है, हमको उस चीज़ के बारे में ये पता करना है कि कोई फैक्ट जो हमें प्रेजेंट किया जा रहा है, वो फैक्ट का फाउंडेशन कहाँ है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है, उसके ऊपर कोई रिसर्च किया गया है या नहीं किया गया। और इसी वजह से क्या है कि आजकल आप देखते होंगे कि देयर आर केसेस पीपल बिलीव इन एनी मैसेज विच कम्स ऑन व्हाट्सएप, और दे जस्ट मेक एन आइडिया कि अच्छा ये सही चीज़ है। तो इससे हमें बचना चाहिए। वेल, आज का हमारा सेशन कंक्लूड हुआ, थोड़ा हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया है, और टॉपिक छोटा था। इसमें अगर कोई फीडबैक है तो आप बताइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जो जिन लोगों को मैंने ऐड किया है। आई थिंक मिनहाज आपको शायद ऐड नहीं किया उस ग्रुप में, मैं कर दूंगा आज। कोई फीडबैक है तो उसमें शेयर कर सकते हैं, और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह, और थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। आज अरहम भी नहीं था, उसका भी आज एक सेशन है, क्लास है आई थिंक, तो ही इज़ बिजी। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम।